Hello, good morning, students. I welcome you again in my virtual class in English. And as I promised you yesterday to you that I will send you a PPT or some points to make aware you how to appreciate a poem critically. Dear students, as you know, every time or most of the time, there is a question in your question paper that critically evaluate the poem, this and that. So, I think you should be aware or you should be known that how we should appreciate the poem critically. प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश लिटरेचर के स्पेशली क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एप्रिसिएशन लिखिए इस पोएम का, किसी भी पोएम का पूछ लेते हैं। तो जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि हमें इसकी ट्रांसलेशन और जो इसके मीनिंग है वो बताने हैं। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू that it doesn't mean only to write the meaning of the poem. Meaning is also important, but except meaning or in spite of meaning, there are so many things that you have to be focused on some points. And today this PPT, I would like to enhance you to the techniques or some devices that will make you sharpen or that will make you uh, eligible or able to appreciate the poem critically. So this is first slide, and it is showing the purpose, what is the topic of our today's class, how to appreciate a poem critically. So first of all, we should know what kind of poem you are going to discuss. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पोएम आप क्रिटिकली एवेलुएट करने जा रहे हैं उस वो किस तरह की पोएम है। मैंने आपको कई बार पहले भी क्लास में बताया है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स इन पोइट्री. It may be lyric, it may be sonnet, ode, elegy, epic, ballad, and there are so many other things. Songs like songs of Rabindranath Tagore, बहुत सारी तरह की है, वैरायटीज है पोएम की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पोएम आप क्रिटिकली इवेलुएट करने जा रहे हैं वो किस तरह की पोएम है. इज इट नरेटिव और नॉन नरेटिव? नरेटिव मीन्स मोस्ट ऑफ द पोएम्स विच आर लॉन्ग इन लेंथ, जो बहुत लंबी लंबी पोएम होती है वो नरेटिव पोएम्स होती है. जैसे जितने भी एपिक हमारे अगर लिखे गए हैं तो वो भी एक तरह की पोएम्स है. अगर आप देखें जैसे द रेप ऑफ द लॉक ऑफ अलेक्जेंडर पोप, दिस इज ऑल्सो ए पोएम, लेंथी पोएम. ठीक है, तो ये चीज भी क्या है, ये पोइट्री की फॉर्म में लिखा हुआ है सारा का सारा. तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये नरेटिव पोएम है. दूसरे होते हैं कुछ छोटी पोएम, जैसे लिरिक हो गए, ठीक है, जैसे सोनेट हो गए, ओड है, एलिजी है, ये सारी चीजें. कल अभी आपने एक पोएम पढ़ी थी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस.
This is a kind of sonnet. And ode on intimation of immortality. This is an ode of विलियम वर्ड्सवर्थ. तो कौन सी पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए. Second thing that you have to focus on the theme of the poem. What is the theme of the poem? This is very important. मैसेज क्या है उसके अंदर, फिलोसफी क्या है उसकी, मोरल क्या है. When we studied the world too much is with us of William Wordsworth study, so if you have focused on the themes, on the message, on the philosophy of William Wordsworth, so you can understand that the philosophy or message or moral of the poem is that we should be enjoy nature. We should not destroy the nature, or on the name of industrialization we are cutting the trees, we are making the pollution, we are disturbing the balance of nature. So this kind of message is here in the poem The World is Too Much With Us that we discussed yesterday. वहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ह्यूमन बींग्स जो मशीन्स बनती जा रही है, और दे हैव बिकम ओनली द मशीन्स, दे हैव नो फीलिंग्स, they have no good things in the human beings. Why it is there? Because we are going far away from the nature and we are disturbing the nature also, and it may be in the result of destruction. The tone, atmosphere and mood. What kind of tone is here? Is there is there an appeal? Is there a warning? Is there a request? What kind of tone is there? What kind of atmosphere is there? And what kind of mood of poet is presented through this poem? This is also important. क्या यहाँ पर humorous है, or is it serious poem? It is sarcastic poem, it is meditative, or it is in the form of ironic. What kind of appeal is there? What kind of warning is there? What kind of suggestion is there? Or is there only fun in the poem? This is also very important. तो यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि पोएम में किस तरह का एटमॉस्फेयर, किस तरह की टोन, किस तरह का मूड कवि और पोइट अपना प्रेजेंट कर रहे हैं. The next thing is that on which you have to focus, who is the speaker. This is very important. Speaker may be first person, speaker may be second person or the third person. Speaker may be the poet himself, or speaker may be the another one who is not the part of the poem, or the who is not one of the characters which are described in the poem, and it may be a neutral person who is standing out of the you can say who is standing out of the poem and watching neutrally the scene and giving his or her reactions. This is very important. Is it impersonal poem or personal poem? Is it universal appeal in the poem or not?
जैसे when we talk about the poem of William Wordsworth, like just like the daffodils, here you can see. हाँ, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हु इज द स्पीकर and is it the personal poem or impersonal poem. If you talk about a particular poem of the Wordsworth, the daffodils, so you will say this is the personal poem in which the Wordsworth is describing or expressing her views about the nature and personal kind of feeling. And if you go through the poem of Tom's Gray, the Alice written in a country churchyard, then you will find that this is a kind of poem that is maybe you can say this is a kind of poem that is impersonal, in which he is the subject matter of the poem is not the poet himself, but the poor farmers or the people who are cut off from the a particular elite, particular class of the society. So this is also very important. The next point on which you have to focus, the use of figures of speech. Figures of speech means the what kind of devices the poet has used in the poem. It may be used consciously or unconsciously. ऐसा नहीं है कि अगर मान लो अलंकार का या फिगर्स ऑफ स्पीच का जो प्रयोग पोइट ने किया है वो उसने मेंटली प्रिपेयर था, वो यू कैन से कि मुझे इस अलंकार का प्रयोग करना है, ठीक है। हो सकता है कि उसने इस चीज के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये अलंकार सुटेबल रहेगा, इसलिए उसने प्रयोग किया है। और हो सकता है कि अपने भावों की अभिव्यक्ति व्यक्त करते समय वो इतना इमोशनल, अ, इतना ये कह सकते हैं कि आप इतना क्रिएटिव हो गया कि उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसने अलंकार का प्रयोग भी किया है। तो यू कैन से द यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच मे बी consciously or unconsciously, but you have to focus which particular figures of speech or which particular of device has been used by the poet in the poem, and what effect has been grown, what beauty has come after using these figures of speech in the poem. कि poem में वो डिवाइस, वो टेक्निक, वो क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, वो फिगर्स ऑफ स्पीच किस तरह से प्रयोग में आई और उसका प्रयोग करने के बाद पोयम में क्या चेंजेस आए या कैसे उसकी सुंदरता में वृद्धि हुई, ये भी आपको पॉइंट पे फोकस करना है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज फोनेटिक्स, सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना था यूज ऑफ फनीम्स। फोनेटिक्स की जगह क्या है, यूज ऑफ फनीम्स। फनीम्स होती है द रिपीटिशन ऑफ द साउंड्स, द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स एंड यूज ऑफ सिम्बली, मेटाफर, ये सब, एंड हाउ दे एनहांस द ब्यूटी। यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ साउंड और रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स की जब बात करते हैं, I would like to give you one example from the poem The Daffodils. There was a line, thousand I saw at a glance, and I gazed and gazed. The word gazed is repeated 2 times. So you have to focus what changes have come after the repetition of the words. कि शब्दों का प्रयोग करने के बाद क्या कोई चेंज आया, क्या मीनिंग में, क्या अर्थ में कोई बदलाव आया, क्या जो इमोशंस की जो ये कह सकते हैं आप जो डिग्री थी क्या उसमें वृद्धि हुई।
उसने कहा, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके लिए। जब वो कहता है गेज एंड गेज, मैं देखता रहा और देखता रहा, इट मीन्स कि वो बताना चाह रहा है कि आई बिकेम सो इम्प्रेस्ड, आई आई फॉरगॉट टू माई सेल्फ, भूल गया अपने आप को भी, मैं देखता रहा, घूरता रहा और देखता रहा और देखता ही रह गया। तो यहाँ पर वो अपने भावों के व्यक्ति बता रहा कि इट वॉज अ सो ब्यूटिफुल सीन दैट आई फॉरगॉट माई सेल्फ एंड आई गेज एंड गेज। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं कि मीनिंग में क्या एनहांस हो रहा है, क्या कैसे उसकी डिग्री ऑफ इमोशंस राइज कर रही है। The second thing is that there are other examples also. In one of his poem, The Tinted Abbey, he writes some lines. 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters. These are the five is repeated many times और बहुत सारी चीजें होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से चेंज आते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने एक चीज और ध्यान देना है कि कई बार साउंड का रिपीटिशन होता है पोयम में। तो साउंड का रिपीटिशन होने से क्या फर्क पड़ता है, आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जब हमारा बच्चा होता है ना, छोटा बेबी घर में होता है 3-4 साल का, और उसको प्ले स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वहाँ जितनी भी आपको पोयम बच्चे के सिलेबस में लगाई गई है, उनके मीनिंग बहुत कम, उनके मीनिंग जानते ही नहीं है यार, छोटे बच्चे कहाँ से जानेंगे, सवाल ये भी है। लेकिन दे लर्न इट, व्हाई? Because it is only the repetition of the sounds, and it is the repetition of the words that make him happy and compel him or her, this little child, to learn it. जैसे बाबा बाबा ब्लैक शिप, ब साउंड की है रिपीटिशन। हैव यू एनी वूल? यस सर, यस सर, 3 bags full। यहाँ पर आप जब इन 4 लाइनों को अगर आप फोनेटिकली आप देखें, तो यहाँ पर देर आर मेनी साउंड्स हु आर रिपीटेड इंटरवल, intervally or non-intervally, they are repeated and they intensify the music। And when a learner is in front of the speaker, in front of the you can say teacher who is teaching this poem, when they read it, when they listen to it, it gives the pleasure to the ears। कानों को क्या देता है, अच्छा लगता है सुनने में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रिपीटिशन ऑफ ट साउंड देखिए इसके अंदर। तो ये जो पोएम्स होती हैं, ये हमारे कानों को क्या करती है, म्यूजिक की आनंद की अनुभूति प्रदान करती है, जिसके कारण हमें ये फर्स्ट लुक में हमें अच्छी लगने लगती है, बाद में हम सेकेंडरी लुक में इसका मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे छात्रों, आपको इस पे भी फोकस करना है कि कहाँ पर रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स है, कहाँ पर रिपीटिशन ऑफ साउंड्स है, कहाँ पर रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस है, और उसके रिपीटिशन के पीछे पॉइंट का पर्पस क्या रहा होगा। उसके बाद आती है इमेजरी। इमेजरी, इट इज द ओनली यूज ऑफ वर्ड्स दैट पोइट इज एबल टू मेक द पिक्चर ऑफ द सीन ऑन योर माइंड। बहुत बड़ी चीज होती है इमेजरी, कि शब्दों के माध्यम से पॉइंट आपके दिमाग पर क्या कर सकता है, जो सिचुएशन, जो पिक्चर वो आपके माइंड पे खींचना, ड्रॉ करना चाह रहा है, उसे कर सकता है। और इमेजरी भी कैसी हो सकती है, ड्यूअल वाली भी हो सकती है, जैसे पीस एंड वॉर, दोनों की एक साथ, मेल एंड फीमेल की। और ये विजुअल है या ऑडिटरी है, कि इमेजरी मान लो साउंड से, जैसे भी मैंने बताया था आपको रिपीटिशन ऑफ साउंड है, तो वहां पर ऑडिटरी इमेज है। विजुअल है कि आपने देखा, और आपको जैसे डैफोडिल्स की जब बात करता है, तो वहाँ हमारे माइंड पे एक चित्र खींचना शुरू हो जाता है, अपने आप पिक्चर बननी शुरू हो जाती है
किस तरह का सीन रहा होगा, एक सुंदर सी नदी होगी, चारों तरफ पहाड़ होंगे और डैफोडिल्स के फ्लावर दूर दूर तक लगे हुए होंगे और वर्षवर्थ घूम रहा होगा। तो ये चीजें क्या है, हम इमेज को विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। टैक्टिकल है, टच वाली है, या थर्मल है, हीट और कोल्ड। कई बार जैसे गाना है ना, ठंडो रे ठंडो, जब वो गाना सुनते हैं तो ठंड सी फील होने लगती है। जी, तो हम बात कर रहे थे थर्मल इमेज की। तो आई आई वाज गिविंग वन एग्जांपल कि नरेंद्र सिंह नेगी का गाना है ठंडो रे ठंडो। तो व्हेन यू लिसन टू दिस सॉन्ग यू फील इन योर बॉडी a kind of touch of cold. So this is the quality of the words, this is the quality of the figures of speech, this is the quality of the creative use of language of poet, that he has given you a kind of feeling, he has provided you a feeling or a sense that you feel, and this is the use of the words. तो ये पॉइंट ने किस तरह क्रिएटिवली इसको यूज कर गया है और किस तरह से आपको वो जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, उनको राइज करने में, उनको इवोक करने में सक्षम हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पोएम। Next is the use of symbols. Symbols means sometimes when you talk to, you want to talk something, but you don't say it directly. You say it in the different through the different devices, and sometimes you convey it to your readers in an indirect way. This is very important. Symbols, just like if you want to love of a young girl, and if you don't want to say that I am in love with you, but you give a kind of rose to her. So rose is the symbol of love, and if you and white is the symbol of the peace. So these are the, if you go in the cremation of anyone, then you wear a white cloth. So this is the white cloth. What's the purpose of white cloth? The purpose is the peace. The you want to show that we are coming here to give you the peace. And the other things that if a man comes in the ambassador car and there is a red light on ambassador car, so you feel just without knowing the person who is inside in this car, you try to guess that it may be a leader, it may be a IPS, it may be an IPS or IAS officer, and just like it is the symbol of power. So these are the different symbols. And in English, when we talk about in English literature, William Wordsworth, or sorry, W.B. Yeats, he has used so many symbols in his poems. So this is very important. तो किस तरह के सिंबल्स पोएम में यूज किए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन सिंबल के माध्यम से कैसे कवि अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, when we read the poem, there are three meaning: primary meaning, secondary meaning, and tertiary meaning. Primary meaning is that anybody can read it. Primary meaning क्या होता है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। एक होता है secondary meaning, and secondary meaning is that the quality of the intellectual people, they know how and what kind of meaning is hidden in these common words. And third is tertiary meaning. Tertiary meaning is totally different from the primary meaning. जैसे हमारे यहाँ अविधा, लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। हालांकि ये सब्जेक्ट थोड़ा डीप हो जाएगा। आई कम बैक टू माय नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिदम and rhyming scheme. What kind of rhythm is there? This is very simple. What kind of rhyme is there? And how it intensify the music? How it is creating music to our readers, to our students? पोएम जो है किस तरह से शब्दों का चयन किया कि म्यूजिक भी क्रिएट हो रहा है उसे जब हम डिक्टेट कर रहे हैं। एंड वी हैव टू फोकस ऑन द डिक्शन। एडजेक्टिव कितने यूज हो रहे हैं, एडवर्ब कितनी है, वर्ब कितनी है, बीच बीच में कैपिटल लेटर्स आएंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉइंट ने क्वेश्चन मार्क कहीं भी लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन कहीं भी लगा दिया।
maybe a different particular purpose to use this kind of words to this kind of sign, and you have to be aware why the poet has used this kind of signs, this kind of words, and what kind of changes have come after using these kind of things. This is very important. You have to focus on them. And I would like to say thank you. I hope it's a vast area to tell you how to evaluate the poem critically. There are so many theories, Indian literary theories, and many lectures could be done on this topic, but because the time has its limit and you have also the limit of your learning, you are the graduate students, and so I have tried my best to equip you with the some devices, some technical devices, or to make aware you about the things that you can use to evaluate a poem critically. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको कुछ चीज़ें जो है बता सकें कि जिससे आप इवेल्युएट कर सकें पोएम को अच्छे ढंग से। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही लाइव और चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब हम मूवी भी देखते हैं तो आप देखना कि कोई मूवी जब बहुत हिट होती है तो वो केवल किसी पर्टिकुलर हीरो की वजह से नहीं होती। उसका हीरो भी अच्छा होगा, उसकी हीरोइन भी अच्छी होगी, उसके डायलॉग्स अच्छे होंगे, उसके कॉस्ट्यूम्स अच्छे होंगे, उसका सेटिंग सेटिंग मतलब किस जगह को पिक्चराइजेशन किया जा रहा घटना का, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसका मैसेज भी होगा कि जो समाज के कंटेम्प्रेरी टाइम में वो मैसेज यूजफुल होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शोले जब हिट हुई तो शोले हिट होने का कारण ऐसा नहीं था कि शोले जैसी मूवी पहले कभी बनी नहीं होगी, उसके जैसी बनी होगी, लेकिन उसके हिट होने के पीछे बहुत सारे रीजन रहे होंगे। उसमें अमिताभ भी था, हेमा मालिनी भी थी, धर्मेंद्र भी था, उसमें बहुत सारे जो इंसिडेंट है गब्बर सिंह का जो वो दिखा रहे ना, वो कहाँ पर वो कर रहा है तो जंगल दिखा रहे हैं, चट्टाने हैं, गांव का सीन है, शहर में आके नहीं डकैती डाल पा रहे डकैत, ठीक है नहीं, तो वो सब चीजें हैं। उसके गाने भी हिट है, उसके डायलॉग्स भी हिट है, ठीक है। उसमें एक यूनिवर्स उस समय जब है डकैतियां चलती थी, आज अगर डकैत की फिल्म दिखाने लगो तो आप नहीं चल पाएगी मुझे लगता है। रीजन क्या है, क्योंकि अब डकैत रहेगी भाई, वो गुंडागर्दी सब उस समय के समय कंटेम्प्रेरी टाइम में मैच कर रही थी थीम। तो देर आर सो मैनी रीजन्स टू हिट ए मूवी, सेम इज हेयर, देर आर सो मैनी पॉइंट ऑफ व्यू एंड you have to focus on these points of view, and you have to you can say postmodern the poem in a different angles, and you have to evaluate it from the not from the eyes of a common man, but as a ट्रेंड रीडर। ये बहुत जरूरी है कि आपको ट्रेंड रीडर की तरह उसको आपको उसको क्या करना है, इवेल्युएट करने की कोशिश करनी चाहिए, और तभी आप उसको क्रिटिकली एवेल्युएट कर पाते हैं, और तभी आप उस पोएम को अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि कैसे ये पोएम अच्छी है तो क्यों है, कि इसमें एक रीजन नहीं है कि अच्छे के होने का ये कारण है, इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं कि इसके अंदर फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसके अंदर डिक्शन है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क भी यूज किया, क्वेश्चन मार्क यूज करने से यहाँ पर वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, वो सोसाइटी से क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर यूनिवर्सल अपील है, यहाँ पर नरेटिव पोएम है, यहाँ पर ये क्वालिटी है, यहाँ पर राइमिंग स्कीम भी है, जो जब हम पोएम की एक फर्स्ट जो हम उसको रीड करते हैं तो देखने में सुनने में अच्छी लगती है, जो हमें बांधे रखती है, उसके बाद हम इसके मीनिंग पे जाते हैं तो मीनिंग और इसका अच्छा है। तो देयर आर सो मैनी रीजंस एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट you can give to evaluate this kind of poem, एंड आई होप मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी ऑन दी in the comment box, and thank you so much. I hope you will enjoy this session. Thank you so much.